کسی قابل بنا دے، رہے جو ذکر سے ہر دم منور، رہے جو ذکر سے ہر دم منور، خدایا ایسا میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، عطا کر آنکھ مجھ کو رونے والی، عطا کر آنکھ مجھ کو رونے والی، اسی کو زیست کا حاصل بنا دے، آمین آمین۔ بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، وسیلہ حضرت علماء دی کا، وسیلہ حضرت علماء دی کا، تو اس اجلاس کو کامل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب، صلوات اللہ وسلامہ علیہ، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب، ہمیں فردوس کے قابل بنا دے، آمین آمین آمین۔ بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، ہمیں جو علم کی دولت عطا کی، ہمیں جو with the other. So he was one and the opponents were 4-5. But one person was dominating him. So Baba Samasi Rahmatullah Alayhi, he said, oh, he is a man. If he comes to our spiritual side, then he will be a wrestler of the spiritual world. So he made tawajjuh on him, and Sayyid Amirullah Rahmatullah, he changed his life. And then he became the Shaykh of Haji Bahauddin Naqshband Bukhari Rahmatullah. So you can tell the people. You can tell the people now why. Sheikh Amir Kulal was a wrestler. A bit loudly. He was a wrestler. Sheikh Amir Kulal, he was a wrestler. He was a wrestler. A very good wrestler though. Then one day when he was wrestling against 4 other persons, Sheikh Bobo Samasi was walking past and saw
And Sheikh Bobo Samasi said that this is Sheikh Bobo Samasi made tawajuh on Sheikh Amir Kulal and make dua that he, Amir Kulal, will be a very strong wrestler of the spiritual path. And from that, Sheikh Amir Kulal became the Sheikh of Sheikh Bahauddin Naqshbandi. Baba Samasi Rahmatullah alayh used to come to the father of Khwaja Bahauddin Naqshband Bukhari Rahmatullah alayh from time to time. So one day when Bahauddin Naqshband Bukhari Rahmatullah was small, his father brought him to Baba Samasi for making dua. Baba Samasi saw the child and said, Amir Kulal, if I will be alive, so I will make tarbiyat of this child, and this child will change the world. And if I will die, then it is your responsibility to make tarbiyat of this child. My gut feeling is that he will change the name of this place. The name of the place was Kasre Hindwa. And now the name of the place is Kasre Arifa. Kasre Arifa. The palace of the Arifin. The palace of the Arifin. Kasre Hindwan was the palace of the Hindus. Changed to Kasre Arifin. Sheikh Bahauddin, Sheikh Bobo Samasi, Sheikh Bahauddin Naqshbandi parent, father, is a friend of Sheikh Bobo Samasi, and he brought Sheikh Bahauddin Naqshbandi to see Sheikh Bobo Samasi. And Sheikh Bobo Samasi told Sheikh Amir Kulal that Sheikh Bobo Samasi is going to give tarbiyah to Sheikh Bahauddin, that this Sheikh Bahauddin will one day, inshallah, will change the spiritual life of the people. And he said that if his life is long, then he will make tarbiyah of Sheikh Bahauddin. But if he cannot do it, then Sheikh Amir Kulal must take over, because Sheikh Bahauddin will change the situation of the world, and also the name of this place. This place used to be the palace of the Hindus, and Sheikh Bahauddin will change it to the palace of the Sufis, of the Arifin. Arifin. में वापसी होती है। दूसरे दिन हफ्ता है, सुबह नाश्ता करने के बाद फिर हमारा काफिला होटल से निकलता है और रवां दवां होता है हज़रत ख्वाजा अमीर कुलार रहमतुल्लाह के मज़ार की तरफ। ये हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह के भी पीरो मुर्शिद। पहले उनके मज़ार पर हाज़री होती है हज़रत अमीर कुलार रहमतुल्लाह के। ये भी बिल्कुल एक गाँव सा है, रास्ते में ही हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद का मज़ार था, लेकिन हमारा वहाँ उस वक़्त उतरना नहीं हुआ। सीधा हज़रत अमीर कुलार रहमतुल्लाह के मज़ार पे हम जा रहे हैं। हज़रत जी मद्दजिल्लुहु खुद तशरीफ़ लाए, दुआ भी करवाई, सारा काफ़िला बसों से उतरता है, हज़रत के मज़ार पर फातिहा पढ़ी जाती है, दुआ की जाती है। उसके बाद फिर ये हमारा काफ़िला दोबारा हज़रत ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह के मज़ार की तरफ रवां दवां होता है। कसरे आरफा उस गांव का, उस जगह का आजकल नाम है, जिसको कभी कसरे हिंदुआन भी कहा जाता था, लेकिन हज़रत की बरकतों से कसरे आरफा के नाम से बदला। पहले हज़रत की वालदा के मज़ार पर हाज़री हुई, दुआ हुई, फातिहा हुई, फिर हज़रत के मज़ार पर तमाम काफ़िले का आना हुआ। और ये दिन हमारा मुस्तकिल हज़रत ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह के मज़ार के लिए मखसूस था, जहाँ दिन को आपस के अंदर तारुफ, ख़यालात का तबादला, मुलाकात, बयानात, ये
दोपहर का खाना भी